चलो आरंभ कर दो कहीं এইটা जो সরিগলা পরে এটা কেমন করিবে না कितने बड़े बने बा ये कर दीजिए कि कौन कर दीजिए कितने मैं कौन कर दी ये बड़ा कर दी कौन ने 24 तो रहा हमरो এটা কত রকম 24 बहुत ही गला मड्डी गला सो देखो तुम এটি তাহলে কোন দেখাবো নি अच्छा ये मेरा किन 6 पड़े এটা স্যার 3 চলছে ঠিক 3 হলো তো এটা মান 4 3 नहीं সেটা যদি ইয়ে করিব না বড় করিব ছোট করিব কিন্তু বড় করলে আমি 4 না সেন পড়া 4 না 4 যা পড়ে আর তো পড়ে এই 4 যা পড়ে না সইলা পরে কিছু কোড হাতে মারিয়া দরকার সেটা রুল সইলা আর এই সইলা কোড সইলা এটা কিছু নেই সইলা পরে সে অটোমেটিক পড়ে আসে লাগি ধরো এটি মনে ଅଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆପଣ ସରିଗଲା ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠିକି ଯିବେ ହେରି ଫୋରକୁ ଇଏ କରିବେ ଫୋରଟା ହାତ ମାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି କି ଅସୁବିଧା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଚାରିଟା ଖୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଚେନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଦୁଇଟା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ କଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଖୋଲିଛି ଏଇଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଏଇଟା ତୁମ ପଢ଼ା ହେବ ତ ହେଲା बोले सॉरी अच्छी नहीं बोले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अच्छा तुम्हारा परीक्षा तो पाख आसिलानी तेणु आम जल्दी पढ़ेबा ये जी क्लास पढ़ो से कंप्लीट करदे जो कोर्स गुरा ओके तो आम आज प्रिएम्बुलटा पढ़ा प्रिएम्बुल पढ़ाई सालिएंट फीचरटा पढ़ाई कि नहीं टिके मत मेसेज करेंगे जदि जानी शुणी पड़े सालिएंट फीचरटा परे पढ़ा ये क्लास रे आम सालिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा पढ़ाई बोधे यस ना सालिएंट फीचर पढ़ाई ओके ताले आम प्रिएम्बुलटा पढ़ा प्रिएम्बुलटा पढ़ाई तुमर तादरे अल्प समय डिस्कशन करी क्वेश्चन देखिदबा किसी कमेंट दियंतु जदि सालिएंट फीचर पढ़ाई ताले आमे पढ़िबानी आउ गोटे कोन पढ़िबा बोले तो प्रिएम्बुल आमे स्टार्ट करिबा प्रिएम्बुल होउची प्रिएम्बुल रो अर्थ कोन ना प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुखबंध प्रिएम्बुल माने इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ओके हमें क्वेश्चन वाइज जीवा क्वेश्चन रे कोन कोन इंपोर्टेंट आसीबो प्रिएम्बुल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु डिराइव हिच बा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु हमें इंस्पायर हिचु एवं एटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होची प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन जहार प्रिएम्बुल थिला ओके तार पाखापाखि 1787 ए बेलू को तार प्रिएम्बुल हिसाब थिला ओके एवं प्रिएम्बुल 22 जनवरी दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भाव रे प्रिएम्बुल रो पूर्व ना थिला कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे सेटा आछि ता ना थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एटा मूव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रे मूव हेतिला को दिन 13 डिसेंबर 1946 रे
एटा मूव हेतला अर्थात माने बिल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा हेतला एवं पास होला को दिन 22 जनवरी 1947 तारी ना हैला प्रीएम्बल ओके नाउ सी तापर देखिबा कोन कोन अछि तापर प्रीएम्बल टा मु देई देछि टिके खाली नजर पकई दियंतु कोन कोन सब अछि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved solemnly means seriously resolved means शपथ नबा to constitute India into a sovereign ए ऑर्डर गुरा टे मन रखंतु sovereign socialist secular democratic republic ओके ये चारटा वर्ड sovereign socialist secular democratic republic सोशलिस्ट और सेकुलर ए दुटा वर्ड ये जो दुटा वर्ड ये ऐड हेतला केबे ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ए दुईटी शब्द प्रीएम्बल रे ऐड हेतला ओके प्रीएम्बल रे दुटा शब्द नथिला तला आगुरु कोन थिला ना सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट आगुरु थिला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 76 मसिया परे ए दुईटा शब्द प्रीएम्बल रे ऐड करा हेतला तेन वर्तमान को होची सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर ओके तीनटा एस तापरे डी आर ओके से अनुसार देखिबे कन क्वेश्चन इजर पकाय तापरे सिटीजन मान को एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस को टाइप रो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ओके पांचटा जस्टिस तीनटा जस्टिस दबो तापरे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप अर्थात जो लिबर्टी माने को व्हाट हम बुझी दे लिबर्टी जस्टिस लिबर्टी माने लिबर्टी मींस absence of restraint माने नियंत्रण restraint so what is the meaning of liberty माने नियंत्रण रो अभाव स्वाधीनता स्वतंत्रता ओके लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ये पांचटी लिबर्टी संविधान में दिया जाइए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ओके समस्त समान धनी गरीब उच्च नीच जाति समस्त समान एवं समस्त को समान सुविधा दिया जीवो समान सुविधा सुयोग दिया जीवो जहाँ भी सब सुविधा राष्ट्र दउची समस्त को समान जाति धर्म वर्ण निर्विशेष fraternity माने that is common brotherhoodness okay common brotherhoodness एटा बेले बेले क्वेश्चन ने पकाए जे आर माने कोन तो एटा आपण मानटी मन रखंतु common brotherhoodness okay common brotherhoodness आ माने होची भातृत्ववाद तो इन आवर constituent assembly 26th day of November 1949 we hereby adopt enact and give ourselves this constitution ओके मु कहितली कि डेट ऑफ अडॉप्शन हला 26 नवंबर 1949 एवं डेट ऑफ कमेंसमेंट हला 26 जनवरी 1950 संविधान कार्यकारी हला 1950 मसिया जनवरी 26 रु किंतु ताकु गृहीत कराइतला अडॉप्ट कराइतला 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ओके तो एटा हमकु डी मन रखियो पड़िबो तापरे हमें विभिन्न वर्ड गुरा टी देखि देबा okay so any comment you can place here any comment okay तापरे sovereignty माने मु किछि वर्ड रो मीनिंग कहि दोछि जोटा दरकार हमर sovereignty socialist जो पांचटा वर्ड अछि टिके खाली शॉर्टली मन रखंतु sovereign means completely independent ए वर्ड उराटी मन रखंतु sovereign okay socialist means socialist माने कोन that is the upliftment of a social equality तार्थ no discrimination किछि पातर अंतर नीति रहिबोनी discrimination on the grounds of
on the grounds of religion, race, caste, ଆଉ sex or place of birth. ओके जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कौन प्रकार रही कौन पातरंतर रही सेटा होची सोशल इक्व सोशलिस्ट. ओके सोशलिस्ट. देन सेकुलर. सेकुलर माने कौन दैट इज all religions have equal status and राष्ट्र किछि धर्म नहीं. स्टेट हैज नो रिलीजन. सेटा होची सेकुलर. ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस. हमर जो फंडामेंटल राइट रे अछि आर्टिकल सेकुलर प्रोविजन गुरा कॉन्स्टिट्यूशन कोडी अछि आर्टिकल 14 रे आर्टिकल 14 15 और 25 to 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से सब हमर सेकुलर फ्यूचर अछि एवं भारत एक धर्म निरपेक्ष कंट्री बोली से प्रमाणित कराई. तो संविधान रे वार्डटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एंट्री हेतला मु जोटा कहली फास्ट. ओके नाउ दैट इज your sovereign socialist secular country. Then democratic means गणतांत्रिक. democratic तो हम जानी छी democratic माने democratic means that all people have right to vote okay and all people have right to vote. सेटा republic माने why India is a republic? That is the head of the state is elected. Head of the state is elected. The president elect होइतिबारु भारत को रिपब्लिक कहले. एवं रिपब्लिक टा कोट आछि borrowed from French constitution. France रू रिपब्लिक concept हमरा फ्रेंच constitution. ओके फ्रेंच constitution रे अछि एटा रिपब्लिक वर्ड. Okay, so these are the meaning of the word. Now come to the quotation. Preamble को किए कौन कहिसंती. Quotes on preamble को केते जण कौन कहिसंती एटा टी मन रखिबे. के मुंशी कहितले that is के मुंशी कहिसंती horoscope of the constitution. horoscope जेंति horoscope रु हमें गोटे लोकर भविष्यत बा ये जानि पारू सेंती प्रियम्बल रु हमें संविधान विषय जानी परिया बोली के मुंशी ताको horoscope of constitution कहितले. पंडित ठाकुरदास भार्गव it is the soul of the constitution बोली कहितले. heart and soul of the constitution एटा के कहितले पंडित ठाकुरदास भार्गव. then preamble to the keynote Ernest Barker होचुनी इंग्रजी दार्शनिक से कहितले keynote to the constitution. एवं preamble is an identity card of the constitution आपको कहितले नानी पालखीवाला जने वकील एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से कहितले preamble होची संविधान रो एक आइडेंटिटी कार्ड सदृश. Okay, so preamble is the identity card of the constitution बोली से कहितले. So this is your quotation on preamble. Let us see the questions. अच्छा मु एथरे पार्ट्स एंड शेड्यूल दे दीची टिके नजर पके दियंतु. पार्ट्स एंड शेड्यूल रे प्रथम पार्ट रे हमरो रखुची कोन यूनियन एंड टेरिटरी. तो टिके मन रखिबे कोन पार्ट ऊपर क्वेश्चन आसी पारे. तो पार्ट यूनियन टेरिटरी रे पार्ट 1 अछि यूनियन एंड टेरिटरी. तापर पार्ट 2 रे सिटीजनशिप. पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स. ओके एटा टिके नजर पकेबे. पार्ट 4 रे डीपीएसपी तार आर्टिकल गुरा भी देइछि मु. पार्ट IBA फंडामेंटल ड्यूटी एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे 1976 रे एडेड. ओके एवं पार्ट बी टा यूनियन एतरे अछि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट समस्ते एथिरे अछंती जदि पड़िबो सुप्रीम कोर्ट को पार्ट रे अछि ताले पार्ट 5 प्रेसिडेंट को पार्ट रे अछंती पार्ट 5 ओके सो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा एरा सब यूनियन गवर्नमेंट एटा यूनियन गवर्नमेंट तो एथिरे सब पाइबा हमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट सेमती स्टेट गवर्नमेंट गुरा सब हम पाइबा कोन गवर्नर अच्छी सीएम ओके तापरे विधानसभा तापरे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरा सब अछंती एथिरे पार्ट बीआई रे पड़िबो गवर्नर को पार्ट रे अछंती गवर्नर अछंती पार्ट बीआई रे स्टेट्स रे सेमती सेकंड पार्ट इटा डिलीट हो जाइए इटा को रिपील करा जाइए इटा इटा बर्तमान आ नाही पार्ट बी आई डबल आईटा तेणु इटा हमर को अमेंडमेंट ऐड डिलीट होइछि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे पार्ट 6 टा को डिलीट कराइछि कहितली सेटा जो पार्ट 6 डिलीट कराइछि कारण एथिरे प्रिंसली स्टेट उरा थिला तापरे पार्ट एटा को अमेंडमेंट ऐड डिलीट होइछि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 तापरे यूनियन टेरिटरी अछि एबे हमरो 8 यूनियन टेरिटरीज को हमें देखुचे ओके तो सेगुरा सब मन रखिबो पार्ट आईएक्स टा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1973 रे ऐड होइछ एटा ऐड होइछ केतरे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऐड होइछ सेमती म्युनिसिपैलिटी टा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1973 रे ऐड होइछ sorry 1992 एटा भी 1992 sorry 74 1992 73 भी 1992 तो दीटा को एटा रही छै प्राइम मिनिस्टर किए थिले पीवी नरसिंह राव द प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव को समय रे ए दीटा पार्ट ऐड होइछि पंचायत आउ म्युनिसिपैलिटी यदि क्वेश्चन आसीबो कहा समय रे पंचायत पूरा ऐड होइछि तारे पीवी नरसिंह राव नले को अमेंडमेंट ऐड होइछि 73rd एटा होछि 74th ओके तापरे पार्ट एक्स टा शेड्यूल्ड एरियाज आउ ट्राइबल एरियाज ओके ओडिसा भी गोटे ओडिसा रे पाखापाखि 13टी जिल्ला रे शेड्यूल्ड एरिया अछि तेन शेड्यूल्ड एरिया माने जो एरिया टा शेड्यूल्ड ट्राइब बा शेड्यूल्ड कास्ट अंडर डेवलप्ड एरिया ताको शेड्यूल्ड एरिया कुआ जाय तेन एटा पार्ट एक्स आई रे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स प्लस जो लेजिस्लेटिव रिलेशन एग्जीक्यूटिव रिलेशन केंद्र और राज्य मध्य रे एटा अछि सेमती फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एगरा सब एथिरे कराई छि एथिरे फाइनेंस कमिशन एथिरे अछि 280 रे फाइनेंस कमिशन जो थाए फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया ए पर्यंत 15टा फाइनेंस कमिशन हेइ सारछि ओके से फाइनेंस कमिशन रो आर्टिकल होछि केते 280 एटा अछि पार्ट एक्स आई रे पार्ट एक्स डबल आई रे 12 पार्ट रे पार्ट अछि जदि पढे गुड मॉर्निंग विश्व सो फाइनेंस और प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एगरा सब अछि एथिरे फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया अछंती 280 रे जदि पढिबो फाइनेंस कमिशन को पार्ट रे अछंती तार पकेइबे कोन 12 रे फाइनेंस कमिशन अछंती टिके नजर पके दिथिबा परीक्षा आसी गलानी तेणु ताकू टिके नजर पके देबा देखिबा कोन एक्चुअली जिंसटा अछि ओके तो एटा तापरे पार्ट 3rd रे सेमती ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एगुरा सब अछि एवं जे जो पार्ट 12 रे प्रॉपर्टी अछि राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 12 जो राइट टू प्रॉपर्टी टा एटा को पार्ट रे अछि राइट टू प्रॉपर्टी टा आर्टिकल ला केते 300A हला एटा अछि इन पार्ट एक्स डबल आई ओके तो एक्स डबल आई रे फाइनेंस कमिशन भी अछंती आ राइट टू प्रॉपर्टी भी अछि जे पडे क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट रे अछि एटा पार्ट 12 रे अछि ओके तो पार्ट 13 रे होछि कोन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शैल बी फ्री अक्रॉस द कंट्री हला अंतर राज्य वाणिज्य मुक्त रहिबो ई जो आर्टिकल 301 रे अछि एटा बहुत समय क्वेश्चन ने पडे आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट को आर्टिकल रे इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज फ्री बोली लिखा अछि एटा होछि 300A के
301 ओके तापरे XIB रे हमर UPSC अछि UPSC और स्टेट OPSC एगरा सब मेंशन हेछन को पार्ट रे पार्ट 14 रे एटा मेंशन हेछन सेटा भी मन रखथिबे तापरे ट्रिब्यूनल्स एटा आड हला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एटा आड हेछ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा हमर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एगुरा सब आड हेछ कोथरे पार्ट XIB ए रे एवं ए पार्ट टा 42nd रे आड हेछ तापरे XB रे इलेक्शन एतरे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अछि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी एतरे अछि 326 रे हला 326 रे अछि कोन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टा अछि कोथरे ना 326 रे एटा होची धर जो हमरो आर्टिकल 326 रे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एटा बहुत समय पड़े जोटा राइट टू वोट बेली हमें कहू सेटा एटी अछि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से पार्ट XB रे अछि 326 आर्टिकल इलेक्शन कमिशन हला केते 324 ओके सेटा जेमतेले टिके मन रखिबो ओके XBI रे कोन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस माने SC ST OBC एगुरा सब सर्टेन क्लासेस ओके सेंती ऑफिशियल लैंग्वेज हमरो रिमेंबर देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया रे नेशनल लैंग्वेज किछ नाही तीन प्रकार लैंग्वेज एटी अछि गोटेला यूनियन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज भी अच्छी ओके स्टेट लैंग्वेज आउ हमरो कोर्ट लैंग्वेज भी एतरे अच्छी 347 रे एगुरा सब रहिछि तो एगुरा होछि कोन कोर्ट लैंग्वेज होछि इंग्लिश बाकी एगुरा सब स्टेट आंसर हो तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमें कहूचे हमरो सेंति लिंग्विस्टिक कमिशनर ऑफिसर ऑन लिंग्विस्टिक कमिशनर जोटा अछि हमरो लिंग्विस्टिक कमिशनर एटा आर्टिकल 350A रे लिंग्विस्टिक कमिशनर अपॉइंटमेंट होंती सब माइनॉरिटी लैंग्वेज मानकर प्रोटेक्शन पई अपॉइंटमेंट होंती एवं सेमानकु एटा दिया जायछि ए आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा 350A लिंग्विस्टिक कमिशनर ओके तनो ऑफिशियल लैंग्वेज ऊपर कहबा हमर पाखा बकी 22 लैंग्वेज अछि को शेड्यूल ले अछि 22 लैंग्वेजेस ता अछि 8 शेड्यूल पढ़िबा हम 8 शेड्यूल पटे नजर दबा ओके तो दैट इज द थिंग्स देन इमरजेंसी प्रोविजन अछि इमरजेंसी प्रोविजन रे हमर तीन प्रकार इमरजेंसी अछि धर नेशनल इमरजेंसी टा उधर अछि नेशनल इमरजेंसी एटा आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी टा को आर्टिकल 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी टा आर्टिकल 360 तीनटा डी मन रखदिबो ओके वेरी गुड विश्वरंजन तो दैट इज नेशनल इमरजेंसी जानिथिबो तापरे XIST मिसलेनियस सेटा हमर कि देखिबार नै सेटा पछरे देखिबा बर्तन परीक्षा आसी गलानी तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल 368 रे अछि पार्ट XX कोडिए रे अछि ओके तापरे टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस एइथरे 370 अछि तन 370 टा जेतो अमेंड हेछि तेनु 370 टा पढि पारे को पार्ट रे अछि 21 पार्ट रे अछि 370 टा कोन थिला स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एवं जम्मू एंड कश्मीर रो प्रोविजन टा वर्तमान काढी नि अछि किंतु मन रखो 370 हैज नॉट बीन डिलीटेड बा अबोलिश्ड एटा एबे भी अछि किंतु तार क्लॉज 1 टा को अबोलिश कर दिया अछि तेनु क्वेश्चन आसी पारे कि आर्टिकल 370 को पार्ट रे अछि पार्ट 21 रे अछि 21 ओके तापरे XII रे हमरो शॉर्ट टाइटल कॉमन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एवरा सब अछि सो एटा उठे पार्ट ऊपर ओवरऑल आइडिया रखिबो तापरे हमें देखिबा शेड्यूल्स टा भी नै आछि आलोचना करिया पे टी नजर पकई दियो जे फर्स्ट शेड्यूल अछि
हमरो लिस्ट एंड यूनियन स्टेट्स सो हमरो 28 स्टेट्स वर्तमान अछि आउ 8 यूनियन टेरिटरीज तो जेतेबेले नुआ स्टेट तयारी हुए तो सेटा एटा को अमेंड करा जाए जेतेबेले नुआ स्टेट तयारी करा जाए सेतेबेले एई पार्टटा अमेंड हुए सेकेंड शेड्यूल ले समस्त प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ जजेस सैलरी पूरा जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एरा सब सेकेंड शेड्यूल ले मेंशन कराई छि चार्ज एक्सपेंडिचर गुरा थर्ड शेड्यूल ले ओथ्स एंड अफर्मेशन शपथ पाठ जो हमर मंत्री बा प्रेसिडेंट एगुरा सब नियंती शपथ पाठ एगुरा सब एतिर अछि तो फोर्थ शेड्यूल ले राज्यसभा रे केते सीट रहइबो सब स्टेट रे ओडिसा रो राज्यसभा रे केतोटी सीट अछि ओडिसा रो राज्यसभा रे केतोटी हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा फॉर ओडिसा देयर आर केते सीट ओडिसा ओडिसा 10 सीट्स यूपी दा हाईएस्ट यूपी रो 31 ओके यूपी रो 31 अछि ओडिसा 10 सीट्स 10 ओके एराटी मन रखिबो तापरे वेरी गुड विश्व तो फोर्थ शेड्यूल एटा तो जेतेबेले नुआ स्टेट फॉर्मेशन हुए ए दीटा जो शेड्यूल अमेंड हुए फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल तो क्वेश्चन थिबो कि नुआ स्टेट फॉर्मेशन बेले को शेड्यूल अमेंड हबो ताले ऑप्शन दीटा हबो फोर्थ शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल ओके जदि कंबाइन नाही ताले फर्स्ट शेड्यूल टा को मारिबे ओके सेटा टिके माइंड रे रखथिबे तापरे फिफ्थ शेड्यूल ले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया फिफ्थ शेड्यूल ले वर्तमान 10 टी राज्य अछन 10 स्टेट्स ओके 10 स्टेट्स हला हमर के जोटा हमर तमे कहइबो जे जो महाराष्ट्र गुजरात आउ आंध्र तेलंगाना तापरे कर्नाटक झारखंड हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान एरा सब अछंती that is 10 states okay 10 states ओडिशा भी गोटे शेड्यूल रे 6 शेड्यूल रे एटा नाही अरुणाचल प्रदेश नाही एटा भूल रे लेखा आइ छि तले आसाम एटा आसाम लेखा आसाम एटा चेंज हेनी आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मुता कहूची एटीएम स्क्वायर कोन आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ओके विश्व so these are the things about your sixth schedule ले ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स और फिफ्थ शेड्यूल ले केवल शेड्यूल्ड एरियाज अर्थात 10 टी राज्य रे शेड्यूल्ड एरिया अछि ओके क्वेश्चन आसी पारे केतरा राज्य रे शेड्यूल्ड एरिया अछि 10 स्टेट्स ओके सिक्स शेड्यूल ले केतरा स्टेट अछंती 4 स्टेट्स ओके तापरे हमरो सेवन शेड्यूल ले बे चेंज हो जाउची गुरा एटा 61 एटा 52 और इटा होची 97 पाखापाखि इटा अछि तो इटा चेंज हे गेला बे लक्ष्मीकांत को 52 अन्य बहिरे भी अपडेटेड हेची तो गुडा टी मन रखिबो 61 इटा 62 नो 61 इटा 97 इटा 52 एमती अछि तो अपडेट हबो तापरे आसिला 8 शेड्यूल ले आछि हमरो 22 languages aguru originally माने in 1950 originally माने 1950 रे 14 languages थिला एवं तापरे सिंधी आडेला 15th language 21 amendment act ओके then 71 amendment रे संथाली मैथिली बोडो डोगरी ओके इटा जो सॉरी कोंकणी मणिपुरी नेपाली ओके देन 92nd amendment act रे हमरो चारटा आसला संथाली मैथिली बोडो डोगरी एटी नजर करिवे देयर आर 22 लैंग्वेजेस एवं एटी कहूची जे ओरिया became ओडिया by 96th amendment act 2011 हला एटी मन रखिबो 2011 एरा सब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन तो एटा होची 8 शेड्यूल तापरे हमें 9 शेड्यूल को जिबा 9 शेड्यूल टा एडेड हेची फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे एडेड कारण ओरिजिनली देयर were 8 शेड्यूल्स थिला एबे सेटा एडेड ओके
हाँ विश्वरंजन मिलिबो पीडीएफ मिलिबो ओके तो ସେଇଟା होची हमरो added by first amendment act 1951 रे add ହେଲା এটা land reforms ଆଉ right to property fundamental right land reforms railways orders एरा सब अछि पाखापाखि 294 laws एथिरे अछि 294 laws okay so 10 scheduled assembly 52nd amendment act 1985 रे आरंभ होला एथिरे ए समय रे थिले किए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत समय पड़े आईएएस रे भी गोटे क्वेश्चन पड़ता कि फास्ट शेड्यूल अमेंड होला बेले किए प्राइम मिनिस्टर थिला 9 शेड्यूल ऐड होला बेले तो प्राइम मिनिस्टर एटा थिला किए दैट इज प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का समय रे एटा ऐड हेतला कोटा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ तापरे 73rd अमेंडमेंट रे एटा हला पंचायत राज 74th रे पंचायत म्युनिसिपैलिटी 12 शेड्यूल ले हला एथिरे कोन अछि जे म्युनिसिपैलिटी लिस्ट एटरे अछि केते ना 18 सब्जेक्ट्स एटा मन रखदिबो 18 सब्जेक्ट्स हला एथिरे अछि 29 सब्जेक्ट्स 11 शेड्यूल ले 29 सब्जेक्ट्स अछि किंतु हमरो 12 शेड्यूल रे 18 सब्जेक्ट्स अर्थात जो पंचायत की म्युनिसिपैलिटी जा ऊपर लॉ तैयारी करिवे सेटा केतेटा सब्जेक्ट सेतिरे अछि जा ऊपर से लॉ करि परिवे एटा 29 एटा 18 एटा डी मन रखिवे केतेटा शेड्यूल अछि तो शेड्यूल रो टिके सीक्वेंस रा मन रखिवो को शेड्यूल ले कोन अछि गॉट इट नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑफ द preamble and parts model questions एटा मु देइछि किछि क्वेश्चन तक देखो द व्हाट इज ट्रू ऑफ रिपब्लिक कोन रिपब्लिक रो माने कोन तो रिपब्लिक रो माने कोन ना इन रेफर्स टू स्टेट व्हिच इज रूल्ड बाय पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एटा भी गोटे रिपब्लिक रो माने ही पारे ओके रेफर्स टू हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एटा भी ही पारे एटा हेरिडिटरी एटा ही परिबो नाही कारण राज्य रे मुख्य जे राष्ट्र मुख्य से निर्वाचित होबा दरकार सेति पई इंग्लैंड यूके इज नॉट ए रिपब्लिक यूके एंड जापान are not republics काहेकि ना तांकर हेड ऑफ द स्टेट्स इज नॉट इलेक्टेड सेंतु जापान रे कहंती कोन जापान रे कहंती कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अछि बोली कहंती तेनु एगुरा सब रिपब्लिक नो किंतु यूएसए रिपब्लिक फ्रांस रिपब्लिक India Republic because the head of the state is elected. So either think of it 1 2 is the answer. 1 2 is the answer. Okay, so 1 2 is the answer. So 1 2 answer is C. Answer is C. Then preamble to the Constitution of India reads India as sovereign socialist secular democratic republic sovereign socialist secular democratic republic एटा आंसर तो सीक्वेंस टा मन रखिबो सीक्वेंस टा नै कि तो एटा आंसर हो डी एटा सीक्वेंस बदलै देबे से माने तो सेटा टिके मन रखिबो sovereign socialist secular democratic republic ए दिटा वर्ड मु कहली ए दिटा वर्ड पछरे आड हेछि एगुरा ओरिजिनली थिला गॉट इट सो दैट इज आंसर डी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 3 टिके लेवल देछि द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड कोटा प्रीएम्बल रो हमें जानि परिबा एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीएम्बल माने प्रीएम्बल रो कोटा हमें जानि परिबा तो एटा टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एटा प्रीएम्बल रे अछि 26 नवंबर 1949 रे अडॉप्ट हेछि बोली प्रीएम्बल रे लेखा तो एटा ठीक ideal that were to be achieved yes justice equality liberty etc okay so सेटा सब अछि एटा ठीक the system of government yes माने sovereign socialist secular democratic ss dr सेटा होछि system of government source of authority people with the people of India people source of authority ultimate source so people are the ultimate source of authority बोली preamble अछि तेनु आंसर होबो d 1 2 3 4 आंसर d got it ओके सो क्वेश्चन वाइज टी देखो कण एग्जाम पळे आसलानी हमें क्वेश्चन ऊपर बेसी फोकस करिबा
Okay, so that is D. Exam answer is D3. Question number 4. The secular found enshrined in the preamble to the Constitution of India means the state protects all religion. Secular माने भी इटा ठीक. राज्य समस्त religion को ये करियो state does not uphold any religion. राष्ट्र रो किछि religion नहीं. हमें हिंदू हेले हिंदू majority country हेले भी हिंदू को हिंदुस्तान को आ जाए नहीं. अपर अर्थ हिंदुइज्म को खाली प्रोत्साहन दिया होनी. तो इटा भी ठीक. Freedom of faith and worship is allowed to all people. Okay, so it's a fundamental rights. State makes no discrimination on the basis of religion. Yes, 16 article 16 right. So all are correct. All are correct. The answer will be 1, 2, 3, 4. The answer kon achi. Okay, 1, 2, 3, 4. The answer of D. Answer is D. Answer is D. Okay, now the mind of the makers of the constitution is reflected. माने प्रतिफलित होइछि कोथरे प्रियम्बुल रे प्रतिफलित माने कोन चाहुतिले संविधान रो जे तयारी करथले से माने कोन चाहुतिले सेटा प्रियम्बुल लेखा आइछि. ओके, तो सेटा होछि प्रियम्बुल. एटा गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा सेटा मन रखिबो. then your which of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought achi, economic liberty nahi, eta nahi am. Liberty of thought expression, belief, faith, worship, eta achi. Tenu economic liberty nahi, liberty of expression achi, liberty of belief achi. So it answer B. Okay, economic liberty kata kuhai ni. So 6 is B. Yes, Vishwa, 6 is B. Okay, which one of the following statement is correct? Preamble of the Constitution is the part of the Constitution and can be amended under Article 368. देखिए कौन अच्छी तापरे. Preamble of the Constitution is not a part of the Constitution, cannot be amended. Preamble is the part of the basic structure of the Constitution, can be amended only if no change to basic structure is made. It is best answer. Okay, it is best answer of the preamble is the part of the basic structure. A basic structure ta ko case re asitila Kesavananda Bharati case. Kesavananda Bharati case. Bharati versus Union of India. Sorry, government Kerala. Government of Kerala. Government of Kerala. 1973 रे basic structure doctrine by basic structure theory এটা evolve হইতা. Okay, so সেটা C হবো answer. 7 is C. তারপরে 7 is C. তারপরে 8 preamble, sorry, 7 is C. 8, in which of the following constitutional cases Supreme Court gave a ruling that preamble is a part of the Constitution? 7 is 8 is B. Kesavananda Bharati case 1973. Okay, এটা হচ্ছে 1967. এটা হচ্ছে 1960. সাজন সিংটা বোধে সাজন সিং কেসটা বোধে এটা 1983 কি 84 এমতি ওটা কোন হচ্ছে 83. Okay, so that is 67. তো এই কেস রে কইলা সে 1973 রে যে preamble is a part of the Constitution. Okay, the answer is B. The Berubari case, in which the question whether preamble is a part not arose after the first time, was decided in 1960. 1960 data A. Okay, so B and A. 10. How many times the preamble of India has been amended so far? Preamble has been amended so far in 1976 once. So in 1976 by 42nd Amendment Act,
add कौन कला ना 3 words added 3 words कौन words हुआ socialist secular ଆଉ integrity okay already देखिबो once the preamble was first amended in the year 1976 that is D that is A okay tinta word are in 76 रे once amended तापरे 12 preamble was adopted by the Constituent Assembly India as objective resolution. Objective resolution it drafted by Jawaharlal Nehru. Okay, it 13 December 1946 दिन it adopted 22 January 1947 दिन that is introduced ହେଲା ଏବଂ 22 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ adopt ହେଲା objective resolution এটা সেটা preamble ହେଲା Constitution of India originally means in 1950 the 395 article 22 parts 8 schedules so answer A okay originally तो वर्तमान हमर now you can say above 465 articles 25 parts or 12 schedules okay so that is called your answer is A answer A it answer C got it now come to the next question the ninth schedule was added by how many that is ninth schedule first amendment act ମୁଁ କହିଲି prime minister କିଏ ଥିଲା Jawaharlal Nehru D ninth schedule was added by 42nd amendment act 19 the first amendment act 1951 okay now the sixth schedule of constitution pertains to administration of tribal areas in which of the following states Assam Tripura Meghalaya Mizoram okay so it answer of A okay so 15 is C 15 is A Assam Meghalaya Tripura and Mizoram 16 it match the following presidential system रे रहिबो एदर हम देखिए फेडरल सेपरेशन ऑफ पावर parliamentary system रे close relationship between the federal system division of power unitary system concentration of power then 1 2 4 3 answer 1 2 4 3 कारण presidential separation of power अर्थात president executive legislature judiciary are separate माने प्रेसिडेंट कांग्रेस अमेरिका रो पार्लियामेंट ना कोन कांग्रेस तो कांग्रेस रे प्रेसिडेंट मेंबर नो किंतु हम देश रे प्राइम मिनिस्टर जे रियल हेड से पार्लियामेंट रो मेंबर एमपीसी ओके तो सेति पे एटा होची 2 तो सेति पे एटा 1 2 3 4 3 हो आंसर 1 2 4 3 आंसर okay तो 1 2 4 3 तो D आंसर है D C B A तो इट आंसर D okay now which part of the constitution deals with special provision for SC ST and other backward classes part BI okay इटा हला हमर कोन इटा हला हमर part XB election okay part eta language eta amendment
Okay, so এটা টি নজর পকেইব yes that is called part 16 the answer is B 18 which of the following statement is correct regards to preamble to the in this constituent assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt enact give to ourselves this constitution see eta thik hobo eta in this constituent assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt enact give ourselves this constitution give ourselves this adopt enact it adopt enact and give ourselves this constitution तो आंसर सी यही पर है देखी दो टिके सी आंसर सी in this constitution in this in the constituent assembly this 26 no okay so answer A habo A in this constituent assembly in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this yes B answer is B answer will be B yes so now who pronounced the concept of sovereignty uchi that is John Austin John Austin yes that is the answer B then which of the following is not a non-state factor non-state factor mane that is matlab that is not that is pressure groups non-state mane pressure groups you know AITC এটা একটা প্রেসার গ্রুপ RSS ওটা প্রেসার গ্রুপ গভর্নমেন্টের যে পার্ট নু কেবল এইটা ওটা হচ্ছে নন স্টেট নুহ এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলড এজেন্সি সেটিপাই এটা নন স্টেট ফ্যাক্টর এটা একটা স্টেট ফ্যাক্টর বা স্টেট এলিমেন্ট স্টেট ফ্যাক্টর তেଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଟା ଇସଲାମ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସଲାମିକ ଇଏର ଅଛି ଏଇଟା तो तापरे पार्ट XB इलेक्शन पार्ट XS अमेंडमेंट पार्ट XIB सर्विसेस और पार्ट XWI सॉरी এটা তো ভুল আছে सॉरी XB elections XB election XB टा election XX टा amendment ठीक আছে XIB services how that is emergency तो XB नो XII sorry এটা ভুল ଅଛି तो XBBI कर दियो এটা BIII please yes Jay will start soon कारण गवर्नमेंट आउटलाइन दबो ऑफलाइन गवर्नमेंट डेडलाइन ए जो कोन तार गाइडलाइन देला परे से जनवरी 15 सुधा खोलियो बोली विचार करा जाईची विश्वास कराउची कि हबो बोली गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करची ओके सो इमरजेंसी टा तो आंसर 1 2 3 4 हबो 1 2 3 4 आंसर ओ से कुछ कोटा अच्छा तन एटा ओ इनकरेक्टली मैच अच्छा तले एटा आंसर ए हबो सॉरी आंसर एटा डी आंसर डी एटा सी okay now the thing is that 21 and 22 which of the following is in non-state of the college full repeat is central eta C which provision of anti-defection in India is provided under 10th schedule 1985 रे okay 10 schedules
23 so এটা B তারপরে 24 how many languages were found to be mentioned in our constitution সেটা হচ্ছে 22 mentioned originally হলে 14 yes 24 is B D over 24 25 that is language which of the following language is not added to the 8th schedule by 92nd amendment Bodo Dogri Moithili Santali so it have answer it is 71st amendment act 71st amendment act 1992 रे এটা add ହେଇଥିଲା ତ এটা হচ্ছে 71st amendment act মଣିপুରୀ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ that is 92nd amendment act ସେଥିପାଇଁ এটা ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ବୋଡୋ ଡୋଗ୍ରି ମୈଥିଳି ସାନ୍ତାଳୀ ବୋଡୋ ଡୋଗ୍ରି ବି ଆଇଲା okay so answer is A okay so we have covered it that is the things about 25 questions okay now we shall move to the next questions that is 4 okay salient features of Indian constitution हम टिके नजर पकेगी क्वेश्चन गुरा देखिबा okay we shall discuss it and then okay so now we shall discuss the okay so salient feature lengthiest constitution eso ପାଇଁ ଏଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ତ NTPC ବି ସେଟା କାମ ଦବ lengthiest constitution of the world Indian constitution lengthiest constitution of the world salient feature माने कोन विशेष जो संविधान रो विशेष व्यवस्था जो रहिछि सेटा होछि salient feature बा कोन तार important characteristics एटा lengthiest constitution ऊपर हमें जानिछु कारण originally जोटा कहली मु originally एटा 395 articles थिला और 8 schedules parts थिला एटा केते 22 बर्तन एटा above 465 articles से येछि 12 schedules से येछि और 22 only 25 parts भी येछि एवं amendments येछि केते थरा 104 times क्वेश्चन आसिले कि केते थरा कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्यंत अमेंडमेंट हेलानी एटा होछि 104 थरा 104 सेति पई भारत को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली कुआ जाए एवं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हबार कारण होछि कोन ना हमरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो प्रभाव पड़िछि जियोग्राफिकल हिस्टोरी वास्टनेस ऑफ द कंट्री एवं डिटेल डिस्क्रिप्शन हमर कराइछि स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी ओबीसी मान पई रहिछि तेणु एई सब कारण पई भारतीय संविधान एक विशालकाय हेसछि ओके देन प्रोविजन्स फॉर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रो हमर जो अछि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सेटा पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक कोन फीचर्स कोन डुअल हेड हमर प्रेसिडेंट आउ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट dual heads like गोटे प्रेसिडेंट आ गोटे प्राइम मिनिस्टर ये ला हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर ला हेड ऑफ गवर्नमेंट dual head तापरे जो एग्जीक्यूटिव इज responsible to the legislature अर्थात प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर रे रहिबो लेजिस्लेचर प्रति उत्तरदायी रहिबो ओके so that is called the dual heads and executive responsible to the legislature एटा बहुत समय पड़े कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रो कोर प्रिंसिपल हला जे एग्जीक्यूटिव जे से लेजिस्लेचर प्रति उत्तरदायी रही
अर्थात गवर्नमेंट सेठी आंसर दबो पार्लियामेंट एवं पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट is adopted from UK jahaku कहती that is called Westminster model तांको देशर सरकार व्यवस्था को वेस्टमिन्स्टर मॉडल कहती सेतिपई आमे तांको अडॉप्ट करछु पार्लियामेंटरी यूके यूनाइटेड किंगडम रो आमे अडॉप्ट करछु ओके so that is parliamentary form of government then partly rigid partly flexible माने constitution can be amended by simple majority by special majority or by special majority with approval from at least half of the states तो ये दीटा जोटा अच्छी एटा अंडर आर्टिकल 368 under article 368 by special majority माने nearly 2/3 majority तो एटा कोना ना simple majority of members present and voting हेति पई एटा जेतु एटा flexible एटा rigid हेति पई उभय partly rigid partly flexible okay that is why it is called partly rigid partly एटा flexible माने जति member थिबे quorum ऊपर quorum above quorum माने कोन minimum number of members present and voting तो एटा 1/10 अछि 1/10 ओके सो 1/10 द्वारा जो 100 मेंबर अछंती कि 200 मेंबर अछंती ओटे बिल पास हो तल 200 डिवाइडेड 1 तो एटा कम मेंबर रे हेजिबो सिंपल मेथड कम मेंबर एटा अधिका मेंबर दरकार सेति पे एटा कोजे पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल ओके रिपब्लिक स्टेट इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट मु कहली because head of the state is elected okay सेति पे president एवं taken from that is good morning Sarada good morning taken from French constitution okay a republic was adopted on 26th of January 1950 federal state with unitary bias जो इंग्रजी दार्शनिक केसी होयर said Indian constitution is federal in form unitary in spirit ओके तो एटा केसी होयर कहितले काहे कि ना जदियो हमर जे देखिबा हमर फेडरल फीचर कोन अछि फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स
फेडरल फीचर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी हमरो फेडरल फीचर कौन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर है डिवीजन ऑफ पावर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप सेपरेशन ऑफ पावर किसी एग्जांपल हमें दौचे एटा कोन एटा हमर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो किंतु कंसंट्रेशन ऑफ पावर सिंगल सिटीजनशिप ओके तपर एटा पावर ऑफ स्टेट टू succeed माने कोन सेपरेट एटा सिंगल सिटीजनशिप रहिबो डिवीजन ऑफ पावर रहिबो नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कारण एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर सेति पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन न थाए नो पावर टू सक्सीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल फीचर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी डिवीजन ऑफ पावर अच्छी 7th शेड्यूल ले डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल ले डुअल सिटीजनशिप नहीं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पावर टू सक्सीड नहीं एटा सिंगल सिटीजनशिप अच्छी नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नो पावर टू सक्सीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तेनु ए तीनटा ए सब मिश्रण थिबारु फेडरल फीचर भी अच्छी यूनिटरी फीचर भी अच्छी okay so therefore that is called the as Indian constitution contains both federal and unitary provisions it is called so माने it is called so माने कोन federal in form federal state with unitary bias or federal in form or and unitary in spirit okay so that is called therefore federal state with unitary bias okay এটা টিকে কো অ্যাঙ্গেল লে क्वेश्चन आसीबो কই হবনি তেম টিকে তাକୁ নজর रखिदिबो okay now single citizenship रो पर्पस कोन पर्पस हला protect the unity and integrity of India mentioned in part 2 article 5 to 11 amendable by simple majority okay amendable by simple majority single citizenship borrowed from the UK and Canada okay these are the then special provision for certain classes eta part ketere achi part XBI 16 रे SC ST OBC एमान पई अछि हला रिजर्वेशन करा जिवो कि 344 जंती रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST
स्पेशल प्रोविजन करा जीवो तांकर इंटरेस्ट पाई स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशंस और अदर्स एगुरा सब प्रोवाइड दे तेनो एटा गोटे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन एटा तार बड़ कैरेक्टरिस्टिक्स टा ओके तो टी लाइटली खाली जानिया दरकार टिके बहुत पाठ आदरे अछि किंतु हमर जति दरकार हम सेति जानिबा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी माने हायरार्ची ऑफ कोर्ट्स हायरार्ची of courts like a Supreme Court, High Court, or subordinate courts. Okay, the hierarchy of courts. How the meaning consider one judicial system in the country. There are IPC कि CRPC criminal procedure code, civil procedure code. There are same चारियाडे India सारा सब बड़े समान. Okay, so that is called IPC, CRPC एगुरा सब हमरा integrated. Independent माने their mode of appointment, removal. Okay, independent. They are free from executive and legislative interference. Okay, so that is mode of appointment, removal, salary. Then independent bodies रे हमरो रहिबो किए जो माने रहले धर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, UPSC and others. एमन सब अच्छन्ति एमन विभिन्न विभिन्न काम करिवे सब that is called independent bodies. Fundamental rights एगुरा सब fundamental rights रे हमरो एटा mentioned in part 3 of the constitution, article 12 to 35, protected by quote taken from USA constitution. Okay, tapre fundamental right there are at present 6 fundamental rights. Okay, right to equality, right to freedom right against exploitation, right to freedom of religion, cultural educational rights, right to constitutional remedies. Everachi their most important part of the constitution, fundamental rights. Okay, and amendable by special majority. Okay, by special majority amend have. So the fundamental duties for citizens added by 42nd Amendment Act 1976, PM Prime Minister Indira Gandhi. Originally 10 fundamental duties. Original केटा थिला 10 fundamental duties. हला तबरे 11th fundamental duty was added by which amendment? 86 Constitutional Amendment Act 2002. एटा मन रखिबो
Okay, parents or guardians may add karaichi. Now at present 11 fundamental duties. Got it? Fundamental duties are for only citizens, not for aliens. Okay? Got it? Now DPSP are promote social and economic democracy. Fundamental rights promote political democracy. Aim to establish a welfare state. জনমঙ্গলকারী রাষ্ট্র mentioned in part IB article 36 to 51. Okay, character non-justiciable, amendable by special majority. Taken from Irish Constitution of 1937. Isn't it? The DPSP promotes social and economic fundamental rights promote political democracy. Both some question way fundamental rights promote what? Political democracy. But it is social economic democracy aim which establish a welfare state. ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇବିରେ ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ କାହିଁ କରାଯାଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ lack of resources. Okay, so that is the things DPSP independent bodies हम discuss कर दीचे. Got it? Now move to से अनुसार टिके मन रखियो को पार्ट रे अछि कोन एस्टैब्लिश करूची सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दउची नॉन जस्टिसेबल अमेंडेबल स्पेशल मेजॉरिटी टेकन फ्रॉम आयरिश एंति टिके मन रखियो कोन हला. Now move to the next things. Three tier government माने हमर कोन जोटा हला सेंट्रल गवर्नमेंट तापरे स्टेट गवर्नमेंट तापरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटा फर्स्ट एटा सेकंड एटा थर्ड the grassroots level, the panchayats and municipalities. Are you getting my point or not? So that is then three tier को आगुरु दो tier थिला एटा 73rd 74th परे local self government को tier करा गला. So that is power evolves from that devolution of power विकेंद्रीकरण. Okay, so that three tier government एटा अछि हमर part VI रे sorry part V रे एटा part BI रे एटा अछि part IX एटा IXA. So एटा तीनटा गवर्नमेंट अछि part central three tier government तो कुछ. Then universal address suffrage mentioned in article 326 in part
XB এটা all adults attaining 18 years are eligible to vote এবং 18 ইয়ার্সটা by 61st Amendment Act 1988 रे reduce करा इतला 20 to 1 रू that is 61st Amendment Act 1961 amendment रे डाले इतला universal adult suffrage okay universal adult suffrage secular state मु कहि देछि secular state रो meaning टा secular state has no religion of its own all religions have equal status equal status no discrimination on the basis of language mentioned in both articles 14 15 16 17 17 19 okay tapore 25 to 28 29 30 article 326 era so secular provision gura okay so then universal adult suffrage discuss kar deche that is there ठीक है तो जाल टी नजर देव पड़ो तुम्हें जानी सब मुझे जानी किंतु एटा शुभ जानी तुम्हें विश्व सब जानी कि नहीं विश्व रंजन ओके तो सीटा हमें अबे देखिए मेन पार्टा ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन प्रोविजन सब को कॉन्स्टिट्यूशन टिके खाली नजर पकई जे तुम पारे तो मटेरियल सब थिबो किंतु एटा नजर पकई दियो तो फेडरल स्कीम टा में आनिचे कोटो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ गवर्नर जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमीशन इमरजेंसी प्रोविजन अच्छा एई गोटे कथा मन रख as per this act the residuary power are to be vested in गवर्नर जनरल किंतु एबे रेसिडुअरी पावर अछि का हाथ रे सेंट्रल गवर्नमेंट एतरे केतेटा थिला हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स केतेटा थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे हाउ मेनी sections and schedules yes sections and schedules केतेटा थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे ओके मते आंसर कह मु आडे पढौजी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ एटा कोड अछि आर्टिकल 14 लेजिस्लेटिव प्रोसीजर माने बिल पैसेज ऑफ बिल एटा अछि सेतु सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रिट्स ओके पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट बाइकैमरलिज्म ओके तो एथिरे देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे 321 सेक्शन that is 10 schedules sections माने आर्टिकल्स अच्छा मते कह को एक्ट रे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हेतला इन व्हिच एक्ट बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ओके तापर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंपीचमेंट आर्टिकल 61 रे अछि 61 removal of judges article 124 214 रे अछि judicial review article 13 32
226 judicial review रे अछि independent judiciary office of the vice president ओके एगुरा सब 63 आर्टिकल 63 ओके एगुरा सब दे मन रखिबो एटा होची आर्टिकल 63 रे वाइस प्रेसिडेंट कथा में लिखा आइची ओके गॉट इट विश्वरंजन राइट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस इतला वेरी गुड वेल डन सो नाउ Canadian constitution रू देखी दियो फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर vesting residuary powers with the center residuary power माने बुझी होची ना नहीं residuary center होची हमरा कोन जोटा पावर टा जोटा तीनटा लिस्ट रे नाही जोटा तीनटा लिस्ट रे मेंशन नाही ताको residuary power कहंती एटा बे सेंटर हाथ रे अछि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैनेडियन को advisory jurisdiction of supreme court eta article kete article 143 तापर Irish through DPSP method of election of the president 55 article 55 रची nomination of members to Rajya Sabha 12 members from arts science literature ready exam oriented टिके तापर कोन social service किए करंती 12 प्रेसिडेंट किए करंती नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ओके तो एटा मेथड ऑफ इलेक्शन टा आइरिश नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आइरिश किंतु इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया रे कनकरेंट लिस्ट एटा बर्तन 52 सब्जेक्ट्स अछि हमरो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग टा आर्टिकल 108 रे अछि ओके जॉइंट सिटिंग टा आर्टिकल 108 summoned by president chaired by speaker नतले डेप्यूटी स्पीकर नतले हमरा कोना जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स आर्टिकल 301 रे अछि एटा ऑस्ट्रेलिया अछि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन टाकू जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन कहंती 1949 रे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन केइतला suspension of fundamental rights under emergency but article 20 21 cannot be suspended तापर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आइडियल सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग भी प्लानिंग टा इंटरेस्ट French Republic, Liberty, Equality, Framework. Okay, these are the matters. These are the things we have brought from the French Constitution. Okay, ideals of liberty, equality, fraternity, preamble in the preamble जो mention अच्छी सेटा आनिच. तो इटा उची कौन हमरो French Constitution. Got it? So इटा जो मन की दिबो 2021 केबे भी suspend हुए नहीं. एवं इमरजेंसी समय रे एटा को इमरजेंसी समय एटा जो इमरजेंसी टा को इमरजेंसी ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओके ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आउ को समय रे स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जय जगन्नाथ बिकु okay so that is only during national emergency समय हुए केवल okay so you have to remember एवं इटा स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी समय कोनोसी फंडामेंटल राइट टी उल्लंघन करा जाई परिवार किछि व्यवस्था नाही ओके तो इटा
अच्छा एटा आउ गोटे कथा भी मैं कहि दूचे टी कारण एटा एबे हेई पारे जे आर्टिकल 358 अंडर रे आर्टिकल 19 सस्पेंड हुए 19 गेट्स सस्पेंडेड ओके सस्पेंडेड और आर्टिकल 359 अंडर रे other suspended other fundamental rights are suspended during national emergency. Okay, now come to the next fold, South African Constitution. So procedure of amendment of the Constitution, procedure of amendment under Article 368 part XX. এটা হচ্ছে procedure of amendment of South African Constitution. Election of members of Rajya Sabha. এটা South Africa ru, however, but nomination of members of Rajya Sabha is from Irish okay এবং election of president is about the about the from the Irish constitution. Okay, then procedure established by law, it is mentioned in article 21. Okay, so that means that the court will examine the constitutionality of any law or act on the basis of existing provisions of the Constitution. USA रे due process of law. Okay, so that is called procedure established by law. Japanese constitution ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି କି ଜାପାନିଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଜାପାନ ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ମୋନାର୍ଚି. এটা ବହୁତ ସମୟରେ ପଡେ କି କ'ଣ ଅଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାପାନରେ. କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ମୋନାର୍ଚି is the name of the form of government in Japan. Okay, so these are the provisions we have got from. Now come to the your questions. अच्छा, criticism of the constitution रे ताकू कहे elephantine size, large, very large or huge. Elephantine size कही मु कहीं कि impact of Government of India Act 1935, detailed description of each provision तापरे special provisions for
certain classes. Okay, Paradise of Lawyer by Ivor Jennings. Paradise माने कौन heaven. तो जेहेतु अधिक संख्यक वकील थिले जेतिପାଇଁ कुआजाए lawyers paradise बोली एटा किंतु ठीक नहीं कारण से तमरे सेटा अनेक लोक भी थिले अन गांधीयन माने that is Gandhian करो गांधी there is less, there is a little impact, there is a little impact of Gandhian ideology on our constitution. Okay, so then carbon copy of 35 borrowed constitution. Okay, borrowed constitution এটা কুয়া যায় এবং দেখিলে আমি কোন কোন আছে that is the criticism of the constitution. Now come to the questions, multiple choice questions. Okay, multiple choice question रे देखिबा कोन कोन सब प्रोविजन करियबा एटा कोन अब आंसर 1 yes. What will be the answer? That is source of power. Source of power mane that is source of power kon source of power. धर जो आम कहूँ आम राइट टू एजुकेशन अच्छी मोर फंडामेंटल राइट अच्छी गोटे पिला कहबो से ताले कोटा कहबो आर्टिकल 21 कहबो तो आर्टिकल्स टा होची सोर्स ऑफ पावर आर्टिकल इज सोर्स ऑफ पावर they are not powers so articles are the only source of power. Okay, so answer is A, articles are source of power. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? Yes. What will be the answer? Which of the following is a feature of Indian federalism? Yes, answer is A, Vishwaranjan. What is the answer of question number 2? Anyone can answer? Can you answer the question, please? Question number 2. Okay. So there is कौची फेडरेशन इंडियन फेडरलिज्म रा इंडिया को को फेडरेशन इंडिया गोटे को जिंस होची इंडिया इज कॉल्ड ए क्वासी फेडरल कंट्री क्वासी फेडरल इट्स कॉल्ड ए क्वासी फेडरल कंट्री as it contains features of both federal quasi federal. So there is an independent body right. Hours have been clearly divided between center right. Federating units have been given unequal representation right. Unequal representation माने यूपी रे हम कहले 31, यूपी रे 31, ओडिशा रे 10. तो unequal सिक्किम रे 1, सिक्किम रे राज्यसभा रे सिक्किम 1. सेटा होची तेनु सेति पे एटा unequal representation right. Did the result of an agreement? No. So answer is D. Answer D. Yes, right. Now, what is a republic? The head of the state is elected. It answer of it. Can I have one? Okay.
Okay, so that is A. The Indian Constitution closely follows the constitutional system of, yes. What will be the answer? Okay, that is UK. କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ମଡେଲ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ମଡେଲ। Which of the following mainly determines that Indian constitutional system is federal? A written rigid constitution, distribution of power। ଏଇଟା main ହବ, rigid ନୁହଁ ଆମର, ପୁରା rigid ନୁହଁ। So answer is B। Okay, mainly distribution, division, federation कहले distribution of power ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ first। ତେଣୁ ଏଇଟା answer, best answer of 5 number B। Okay, देखिबा ଆଉ କିଛି ମନରୁ ମୁଁ କହିବି, time ଅଛି। The word secular found enshrined in the preamble to the constitution। The state protects all religions। The state does not uphold any religion। Freedom of faith। State makes no discrimination। The 1, 2, 3 for right। Okay, so 1, 2, 3 for D। Indian Constitution is regarded as federal in form, unitary in spirit। Case C, where? Which of the following, that is D, which of the following features the Constitution of India does not resemble the American Constitution? Written अच्छी, federal form of government अच्छी, fundamental rights अच्छी, appointment of governor नहीं। In America, in the USA, governors are elected। Governors are elected। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା appointment ଆସିଛି କୋଉଠୁ? From Canada, from Canadian constitution, Canadian constitution। तो आंसर होची D, yes 8D, right Vishwaranjan, you are right। Question number 9, which is a feature of parliamentary form of government? Parliamentary form ra dissolution of Rajya Sabha, no। Rajya Sabha is a permanent chamber। Right, a भूल, not a feature। Leadership of Prime Minister रखिबा, President is the head of the government, no। That is wrong। Separation of power, no। So that is leadership of Prime Minister। So B। The system of the President is not head of the government, President is head of the state, Prime Minister is the head of the government। The separation of dual head in India is the replica of the heads, dual head Britain। The concept of federation is strong center, Canada। Okay, D, universal adult franchise is mentioned in Article 326 in part XB। Which of the following is correct? There are 22 parts of the constitution which are adopted, thick। There were originally 8 schedules, thick। The original pre-95, thick। Original the preamble did not contain a preamble, भूल। D थिला, मूलर थिला objective resolution हिसाब रे। एटा A,
Okay. So what is the answer to 14? What is the answer to 14? That is 14 cost, which of the following feature is not borrowed from USA? That is your impeachment of the president আসছি, post of vice president আসছি, election of vice president আসেনি, okay, election of vice president আসেনি, election of president from Irish constitution. Removal of the আসছে, the answer is C. Okay, from Irish constitution আসছে. Okay, now 15. Which of the following is not a federal feature in India? Federal feature nue, independent judiciary federal feature, distribution of power federal feature, two government federal feature, single citizenship no. So that is D. অর্থাৎ ফেডারেশন no, কারণ ফেডারেল dual citizenship. Okay, in a federal country there is a dual citizenship, but India is a single citizenship, সেটা এটা federal feature no. India রে ଅଛି নুহ কেমতি, কিন্তু এটা federal no. Okay, which of the correctly matched nomination of members of Rajya Sabha? এটা হচ্ছে কোন, এটা আমরা হচ্ছে কোন আইরিশ, ইলেকশন অফ মেম্বার্স অফ দি সাউথ আফ্রিকা। অফিস অফ দ্য গভর্নর হচ্ছে জিওআই অ্যাক্ট 1935, এইটা ঠিক। সাউথ আফ্রিকা, ওকে, তো এটা কোশ্চেন নম্বর 16D। 17. Which of the following articles contains the provision of universal address suffrage? এটা কোন? B. Article 14, the rule of law by equality before law. 324, election commission of India. 333, nomination of Anglo-Indian members to Vidhan Sabha by governor. Okay, 33. Which incorrectly matched? Independent judiciary USA ঠিক আছে, advisory decision Canada ঠিক আছে, election of Rajya Sabha members এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা। সাউথ আফ্রিকা। concurrent list ঠিক আছে, আনসার সি। এটা আনসার বি, এটা আনসার সি। The emergency provision is derived from Government of India Act. B. German suspension of fundamental rights. Okay. তারপরে which of the following is an extra constitutional body? Extra constitutional body means extra constitutional bodies means the body, which is the body
which is not mentioned under an article of okay, so that is Constitution, the National Commission for Backward Classes, Article 338B, Union Public Service Commission, Article 315, National Commission of Scheduled Tribe, Article 338A. It is a statutory body. Effected in 2014. Okay, so the answer about D. The Constitution can be amended by both. So that is B. Got it? By B. Which of the following parts constitute the philosophical part of the Constitution? Philosophical part means Article 3 and 4. That is justice, equality, liberty, fraternity. Part B, DPSP. Which of the following is a feature of parliamentary form of government? Executive is responsible to judiciary. Executive is responsible to legislature. Collectively responsible to legislature, Article 75. Okay, so that is collectively responsible to legislature and core principle of B. It is B. Joint sitting. Joint sitting in parliament. Article 108. 98 টা তো জানি পারুনি তার এটা অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ordinance making power of the president. Okay, ordinance making power of the president. Ordinance making power of the president. Power of president. এটা money bill in parliament. Money bills in parliament. এটা secretariat of parliament. Okay, ordinance making of the power parliament 213. Article 213 deals with ordinance making power
Okay, so that is 1, 2, 3, 108. Answer is B. Answer is B. Joint sitting. Even joint sitting upare आप टिके मैं कही दूँगी. Joint sitting upare एटा तुम्हें जानिया दरकार कि joint sitting एटा तो B रहिबो. Joint sitting can be summoned by president only on ordinary bill. Chaired by speaker, deputy speaker, none deputy chairman, or any member appointed by okay, so that is the things. So you have to remember 25. Choose the correct option. Procedure established by law is mentioned in Article 21 of the Constitution. Yes. Procedure established by law in India is treated same as the due procedure of law. No. Okay. So that is choose the correct option. Both are true. No. Eta tick. A. A is the answer. Okay. A is the answer. Okay. So this is the question. Next class रे हमें देखिबा अन्य गुरा सब कौन कौन अच्छी. ओके एवं सेटा हमें फॉलो करिबा एवं मते कह खाली अंडर व्हिच अमेंडमेंट जो किछटा पॉसिबल क्वेश्चन मु देखुची अंडर व्हिच अमेंडमेंट reservation for SC and ST in Parliament and state legislative assemblies have been extended till 2030. Answer of 104 Constitutional Amendment Act 2020. Okay, 2020 the answer of the EWS reservation এটা 103 Amendment Act that is 2019. J and K Reorganization Act came into effect on dash, that is your 31st October 2019.
Okay, and first Lieutenant Governor of J&K, G.C. Murmu. Okay, so एगुरा टिके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दी तीनटा मु भाबिले एटा तुम जानिथिबे एगुरा सब, but still try to catch up with the current developments in polity. You may get some questions on that. Okay, next class जदि आसला तार आमे यूनियन टेरिटरी फंडामेंटल राइट गुरा सारिबा, तार क्वेश्चन ऊपर बेसी फोकस करिबा एंड टाइम हम पाकर बहुत कम. Okay, so till then get prepared also, very vigorously prepared हो, कारण एटा बहुत largest competition होबो, lakhs of students are participating, so you need to be more serious or pay more attention than ever to your upcoming examinations. Okay, stay cool, and also observe decency and capture the current developments from that is 6 to 7 months back. Get the current updated. Okay, and I wish you all the best for your upcoming examination. If your if may God bless you with a brilliant career and a kind of success that everyone expects for you. Thank you very much for being with me. Thank you Vishwa, thank you Biku and others. Okay.